Yes, today we will discuss hydrogen spectrum. So hydrogen spectrum is an example of line emission spectrum or atomic emission spectrum. Student ये हम पढ़ चुके हैं. Line emission spectrum, when electrons are excited from low energy level to high energy level, high energy levels are unstable. Immediately electrons return back with the emission of electromagnetic radiations, and hydrogen spectrum is an example of line emission spectrum or atomic emission spectrum. So when electric discharge is passed through hydrogen gas, for example, this is the hydrogen gas. When electric discharge is passed through hydrogen gas at low pressure, a bluish light is emitted, and when this light is passed through prism, स्टूडेंट ये वाली लाइट है जो इससे पास की प्रिज्म से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं. प्रिज्म से इट splits up into a set of 6 lines, and hydrogen spectrum consists of few sets of lines in the ultraviolet. These lines are in the region of ultraviolet, visible and infrared regions. So whenever, for example, this is the electric discharge, यहाँ पे हमने क्या लिया स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस. So when this electric discharge is applied with some potential, then electrons are excited and this gives a bluish light color. When this bluish light color is passed through a prism, then we get set of 6 lines, and these 6 lines are in the region of ultraviolet, visible and infrared regions. And all these lines of hydrogen spectrum have Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Pufund series and Humphrey series. So name of these lines are called Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Pufund series and Humphrey series. And these spectral series were named by the name of the scientists discovered by them. जिन साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स ये लाइन, ये सीरीज को डिस्कवर किया था, उसी साइंटिस्ट के नाम पे ये सीरीज का नाम पड़ गया है. ठीक है स्टूडेंट. So to evaluate wavelength of various hydrogen lines, Ritz introduced the following expression. So Ritz ने हमें ये वाली एक्सप्रेशन दी थी और ये ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं. 1/λ is equal to, this is Rydberg constant for hydrogen atom. This is 1/n1 square. N1 is the low energy level, and this is 1/n2 square. N2 is the higher energy level, and units of 1/λ is per meter. So by this formula we can calculate the value of lambda. ठीक है स्टूडेंट. ये हम नेक्स्ट देखते हैं अभी. So series of hydrogen spectrum. So when the electrons jump from any higher level to first level, for example 8th level to first level, 7th level to first level, 6th level to first level, any higher level to first level, the series obtained is called Lyman series. The series obtained is called Lyman series. ठीक है स्टूडेंट. एंड Lyman series are in the region, कौन से रीजन में स्टूडेंट, अल्ट्रावायलेट रीजन. ये जो कलर्स हमारे पास आएंगे इन Lyman रीजन में, वो कौन से रीजन को बिलोंग करेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन को. वेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू, कौन सी स्टेट स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेट, फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, 9th स्टेट, 10th स्टेट, 11th स्टेट, जो भी स्टेट है, चाहे इनफाइनाइट स्टेट, वेन एवर इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू जंप टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, द सीरीज lines obtained is called Lyman series, and the region in the Lyman series is the ultraviolet region. The wavelengths obtained in the ultraviolet region. Next, Balmer series. So Balmer series, whenever the electrons are excited from any higher energy level to second energy level, this is the second energy level. So whenever the electrons are jump from any higher energy state to which state student, second energy state, then the series obtained called Balmer series. जो ये इलेक्ट्रॉन्स हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, वो कौन सी सीरीज में आ रही हैं, बाल्मर सीरीज में. एंड बाल्मर सीरीज इज इन द रीजन, विजिबल रीजन.
विजिबल रीजन मीन्स जो आपका वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर्स कौन से हैं विजिबल रीजन में. सो नेक्स्ट इज पैशन सीरीज. सो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट टू थर्ड एनर्जी स्टेट. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब ये कौन सी स्टेट है, थर्ड एनर्जी स्टेट. सो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट टू थर्ड स्टेट, द लाइन्स obtained lie in the Paschen series and they belong to infrared region. They belong to infrared region. Next is bracket series. So whenever the electrons are jump from any higher energy level to which level, fourth energy level. Which level? Fourth energy level. Then the series obtained is called bracket series, and this series are lie in the region infrared. Lie in the region infrared. Next is Pfund series. So whenever the electrons are jump from any higher energy level to which level, fifth level, the series obtained is called Pfund series, and the region of Pfund series lie in the which region, infrared. And similarly Humphrey series, whenever the electrons are excited from any higher energy level to which level, sixth level, the series obtained is called Humphrey series, and Humphrey series are also lie in the region infrared. So whenever the electron jump from any higher energy level to first energy level, series obtained Lyman series. When jump from any higher to second state, Balmer series. To third state, Paschen series. To fourth state, bracket series. To fifth state, Pfund series, and to sixth state, Humphrey series. And these last four lines, four series are lie in the region infrared. First is Lyman series lie in the ultraviolet, and then visible, and then all series are lie in the infrared region. ठीक है स्टूडेंट. Now number of spectral lines obtained in hydrogen spectrum. So number of spectral lines in hydrogen spectrum is equal to formula क्या स्टूडेंट, n into n minus 1 by 2. n is the shell number कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से जंप किया है. फॉर एग्जांपल आपका ये हम आप सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज द सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस इज द थर्ड एनर्जी लेवल. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल to lower energy states, 3 to 1, 3 to 2, 2 to 1. So कितनी लाइन्स आई स्टूडेंट, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. यहाँ पे आ जाओ. अब n क्या था हमारा यहाँ पे, 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2. ये 2 क्या हो गए, कैंसल. आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 3. सो नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन कितनी आ गई, यहाँ भी कितनी आई थी, 3. सो दिस इज द बेसिक फार्मूला टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एवर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल. कितनी नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होंगी. ठीक है स्टूडेंट. और ये हम पढ़ चुके हैं लाइमन सीरीज. व्हेन एवर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू विच लेवल, फर्स्ट लेवल, Lyman series, and Lyman series lie in the region ultraviolet. Then Balmer series, any higher energy level to second energy level, and Balmer series lie in the visible region. And then Paschen series, any higher energy level to which level jump, third region lies infrared. Then bracket to fourth energy level, infrared region. If any higher energy level to fifth level, Pfund series, and Pfund series lie in the region infrared. And this is the basic formula to calculate number of spectral lines in hydrogen spectrum, n into n minus 1 by 2. So this is the Ritz formula. इस फॉर्मूले स्टूडेंट क्या निकालेंगे, वेवलेंथ एंड वेव नंबर. सो 1 over लैम्डा इज वेव नंबर, आर रेटरबैग कांस्टेंट. अगर आपका हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट, हाइड्रोजन लाइक आयंस हैं, तो यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर भी आपने पुट करना है, z स्क्वायर. दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस इज द हायर एनर्जी लेवल, एंड आर एच इज रेटरबैग कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1.097 10⁻⁷ पर मीटर. दिस इज ए कांस्टेंट. ठीक है स्टूडेंट. And the Bohr model was successful in determining where all spectral lines of hydrogen should be. So Bohr ने स्टूडेंट कौन सा स्टडी किया था,
स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन के लिए, ठीक है स्टूडेंट, और हाइड्रोजन लाइक आयन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो नेक्स्ट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।